Dear students, we will discuss a new chapter, that is thermodynamics. Thermodynamics, first year students, and I will slowly move into the thermodynamics part of the terms and involve thermodynamics details I will discuss for you. देखो, look at this. I have supervised the introductory part. I have written. Look at this. Thermodynamics. These are what? Thermodynamics देखो दुईटा वर्ड में कंसिस्ट गोटे थर्मो और डायनामिक्स सो thermodynamics consists of two words. Thermodynamics consists of two words. One is thermo, another is dynamics. Thermodynamics क्या consist the thermodynamics thermo गोटे word, dynamics गोटे word. Thermodynamics दुईटा वर्ड को नहीं कि कंसिस्ट हेछि कोन कोन गोटे हला थर्मो आउर हला डायनामिक्स सो thermodynamics consists of two words. One is thermo, second one is dynamics. Clear? So look at thermodynamics. Thermo means thermo माने कोन thermo means heat. Thermo means कोन heat. Dynamics means motion, in motion. Thermo means heat, dynamics means in motion. So heat is also represented. Heat is a form of energy. Heat is a form of energy. So thermodynamics generally in shortly we can say that energy in motion. Energy in motion, that is thermodynamics. Simple, very simple. What is thermodynamics? Energy in motion. Thermodynamics ଆମେ कोन बुझल thermodynamics दुईटा वर्ड में कंसिस्ट हेछि गोटे है thermo और हला dynamics. Thermo means heat. Heat is a form of energy. Heat is a form of energy. Dynamics means in motion. So energy in motion is thermodynamics. Energy in motion is thermodynamics. देखो ए जो दुईटा वर्ड आसला फर्स्ट नेक्स्ट वर्ड आछि ना एनर्जी. नेक्स्ट वर्ड कोन आछि एनर्जी. एनर्जी हमें काहको कहिबा एनर्जी सिंपल इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. सपोज मु एटी छिड़ा अछि मोर गोटे किछि एनर्जी अछि किछि मोर जो एनर्जीटा अछि बॉडी रे अछि सपोज मु बॉडी एबी चला वाला करूची बुला बुली करूची वॉकिंग करूची रनिंग करूची पढौची डिफरेंट काम करूची किंतु बट मु जदी खाद्य न खाइबी मु सपोज 2 दिन मु खाद्य न खाइबी मु दौड़ी परिबी ना. I will not able to run if I will not consume food 2 days at least. So if 2 days I will not consume food, I am not able to run. जदि मु 2 दिन खाद्य न खाइबी मु दौड़ी परिबी ना. जदि गुटे दिन खाद्य न खाइबी तो दौड़िबा कष्ट होइबो किंतु मु स्लाइटली चली परिबी धीरे धीरे. देखो सेटा माय एबिलिटी. मु वर्तमान क्लास 3-4 घंटा नहीं जीवी. दैट इज माय एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू द वर्क. सो मु जदि क्लास 2 घंटा नहीं जाउछी मते कोआ जी वर्तमान रनिंग करी साइकिल 40 किलोमीटर जा मु सेतरे मोर एबिलिटी नाही मु जाई न पारे. सो दैट इज वी कैन से दैट माय कैपेसिटी मु 2-3 घंटा क्लास आराम से नहीं जाई पारी. तो दैट इज माय कैपेसिटी और आई हैव द एनर्जी टू डू दैट वर्क. I have the energy to do that work, but I have not that potential energy or energy to run the bicycle 40 kilometers. मु एका साइड 40 kilometers bicycle चढ़ी जाई परिबे नाही. So what do you mean by energy? Energy माने कोन? It is the capacity to do work. It is the capacity to do work. Energy is a very important terms. You must know what is energy. Energy is the capacity of doing work or it is the capacity to do work. Suppose तुम्हें सकाळ उठिलो तुमरो को स्टूडेंट्स रो पढिबा एबिलिटी 5 घंटा भी एटेस्टेंस से बसिकी पढि परछु लिखि परछु
के स्टूडेंट अध घंटे बसला को तार मथा बिंधुची कि ना मु पारिबि नै उठिकी बुलुची पुणी आसुची तापर बसुची पुणी पढुची से बोले डिफरेंट तेणु सब स्टूडेंट जे एकाथरे 5 घंटा पढ़ी पारिबे कि सब स्टूडेंट जे पढ़ी पारि सब स्टूडेंट 5 घंटा एकाथरे पढ़ी पारिबे तार किछि मीनिंग नाही because someone has that student has the capacity to read 5 hours से गोटे स्टूडेंट 5 घंटा एकाथरे पढ़ी पारुछ that is his capacity of doing that work and he also spends some energy एथि पे से कोन करूछ ए जे 5 घंटा से पढुची से किछि एनर्जी खर्च करूछ definitely he spends some energy जो स्टूडेंट whatever he may be the student if suppose I am teaching a test 3 hours or 4 hours I am spending so much energy similarly जो स्टूडेंट 3-4 घंटा एकाथरे 5 घंटा पढ़ी पारुची लेखुची भी किछि नले भी लेखुची एका स्टेज रे से कोन करूची से एनर्जी खर्च करूची he spends some energy and energy may be different from is energy we can consider duita form on a state and in motion energy we consider two state on a state means at a point suppose I am standing here mo eti tia ichi मोर ओने एनर्जी अछि एठी मोर गोटे मापावाला बॉडी रो किछि एनर्जी अछि बर्तमान मु एपडे चला बुला कली दौड़िली से अध घंटे दे दौड़ी के पुणी पळि आसी सही पॉइंट रे पुणी उठे ठिया आइली मोर सती एनर्जी रहिबो इज इट माय एनर्जी विल बी सेम सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर दिस पॉइंट सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर दिस पॉइंट एंड आई एम रनिंग 2 kilometers that is this point second this is a point this is first point this is second point so मु 2 किलोमीटर दौड़िली ए पॉइंट को पुणी अगेन बैक कर आसी से पॉइंट रे पहुंची किबा ए पॉइंट रे मोर जेतिक एनर्जी थिला ए पॉइंट रे सेतिक एनर्जी 2 किलोमीटर दौड़ी सरला पर रहिबो कि इज इट पॉसिबल नो so state of a system we will consider at a particular point A what is the energy of that system or what is the energy of your human being suppose मु दौड़िली ए पॉइंट रे मोर केते एनर्जी थिला ए पॉइंट रे मु बर्तन ठिया आइछि बर्तन सपोज मु एटी स्टैंड स्टिल ठिया आइछि मोर एनर्जी केते किंतु मु जदी दौड़िबा आरंभ करबी 2 किलोमीटर दौड़िबी तापर गोटे जगह ठिया आइली मोर एनर्जी टा सेम रहिबो नाही बॉडी रो एनर्जी टा सेम रहिबो नाही बिकॉज़ आई स्पेंड सम एनर्जी फॉर रनिंग पर्पस मु दौड़िबा पाई किछि एनर्जी खर्च करूची डेफिनेटली तरो जो एनर्जी टा एठी मु ठिया लबे जतिकी थिला मु 2 किलोमीटर दौड़ी गला परे सेतिकी एनर्जी रहिबो नाही क्लियर जति ए पॉइंट रे मोर जतिकी एनर्जी थिला मु 2 किलोमीटर दौड़ी सरला परे मोर सेतिकी एनर्जी रहिबो नाही आई विल नॉट मेंटेन दैट एनर्जी आफ्टर रनिंग 2 kilometers after running 2 kilometers that energy will not be possessed by body system because I spent some energy मु दौड़िबारे किछि एनर्जी खर्च कर दिली सपोज ए पॉइंट रे मोर ए पॉइंट का सपोज ए पॉइंट का मु बर्तन एठी ठिया आइछि जेतिके एनर्जी मो बॉडी रे अछि मु बर्तन 2 किलोमीटर दौड़िबी कि 5 किलोमीटर दौड़िबी तापर गोटे जगह रे ठिया आइछि सपोज सेही पॉइंट का एला सेतिके एनर्जी रहिबो कि सेतिके एनर्जी केबे रहिबो नाही काहे कि ना मु जो दौड़िबा बेले किछि एनर्जी खर्च करी देइछि एवं सीधा सपोज मु 2 किलोमीटर दौड़ी पारिली आ गोटे लोक 2 किलोमीटर दौड़ी पारु नाही तार एबिलिटी सेतिकी नाही हुए तो तार से एबिलिटी सेतिकी नाही मोर एबिलिटी सेतिकी अछि तुमर बतन 5 घंटा पढी परछो तुमर सेतिकी एबिलिटी अछि जणे पारुनी तार एबिलिटी नाही सो different energy may be different forms and on energy we can consider generally on a state means particular point re and in motion energy to move karibo that is mode of transfer energy रे केवलिया ट्रांसफर होछि जनरली ई जो एनर्जी का ट्रांसफर हुए दुईटा फॉर्म रे गोटेला q आ गोटेला w q वाला heat another is work energy in motion that is mode of transfer two form रे heat बतन सिंपल गोटे एटी सपोज गोटे आयरन प्लेट गेला किबा गोटे एनी मेटल लो एई पटे गरम कर सपोज एटी गरम कर एई पटे ठंडा लागिबो कि ठंडा लागिबो नाही
कौन पाई ना एटी गरम कले हीटा एपटू हीटा दिस साइड सपोज लुक एट एठी तुमे एटा गोटा आयरन पीस लेट इट बी आयरन पीस एटा गोटा आयरन पीस रलो एटी गरम कले कोन हबो एपटे ठंडा लागियो कि ठंडा लागिबो नाही हुए तो किछ समय परे गरम लागि पारे किंतु एटी ठंडा लागिबो नाही एटी कोन हबो हीटा एपटू को ट्रांसफर हबो हीटा एपटू को ट्रांसफर हबो क्लियर सो जेतु एटा हीटा एपटू को ट्रांसफर हैला तब इट इज ए मोड ऑफ ट्रांसफर एटा बोले मोड ऑफ एनर्जी दैट इज मोड ऑफ एनर्जी मींस एनर्जी ट्रांसफर मोड ऑफ एनर्जी मींस एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मोड ऑफ ट्रांसफर में एटी में जोड़ैला एटी हीटिंग कलो ए पॉइंट टू ए पॉइंट को गला एटा वाला पॉइंट सो मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट mode of energy that is called mode of energy clear so energy it is the ability to do what it is generally considered on a state means a particular point re in motion that is mode of transfer so suppose it iron piece lelo eti heating kale kono energy etu heat ta epotu ko gala transfer that is mode of transfer of energy. Heat is also a form of energy. Next, on a state form of energy at a point, that is type of energy. This form of energy generally हमें और डिस्कस करना. बर्तमान ये जो form of energy के ऊपर U internal energy, H enthalpy, G free energy, A Helmholtz energy. U वाला internal energy, H वाला enthalpy, G वाला free energy, A वाला Helmholtz free energy. एक तरह का तो किसी जाने ना लेटर पार्ट रे हम डिस्कस करिया वर्तमान ए जो डिफरेंट एनर्जी ता अछि कोन एनर्जी अछि वर्तमान तुम जानि गेला खाली जो रनिंग गले एनर्जी ता खर्च होछि सपोज आई गोटा एग्जांपल एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स रे भी रहछि एनर्जी केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी थर्मल एनर्जी ए डिफरेंट फॉर्म्स रे अछि वर्तमान एठी हम डिस्कस करिवा देखो सिंपल आमे ह्यूमन बीइंग कथा कंसीडर करछ आमे जण ह्यूमन बीइंग मनीष खाद्य खाऊँ खाद्य जो तुम सिंपल एग्जांपल जदि खाद्य तुम 2 दिन न खाइबो तुम दौड़ी पारिबो कि दौड़ी पारिबो नाही सपोज एटी कोन होछ देखो ह्यूमन बीइंग फूड कंज्यूम करछ फूड खाऊँ फूड खाइले ता बॉडी रे कोन करछ केमिकल एनर्जी ता ये केमिकल रिएक्शन होछ जदि फूड ता डाइजेस्ट न हो से एनर्जी कन्वर्ट होबो नाही सो जो एनर्जी ता जो फूड ता तुम खाऊछ से जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होची दैट कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट होला पर तुम दौड़ी करछो एनर्जी पर दौड़ीबार भी खर्च करछो काम करिबार खर्च करछो चालिबार खर्च करछो पढिबार खर्च करछो सब किछि रे खर्च करछो क्लियर सो ह्यूमन बीइंग फूड कंज्यूम कला फले कोन होची ना केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी ह्यूमन बीइंग दा केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करछि कोडा मैकेनिकल एनर्जी को क्लियर सो इफ ह्यूमन बीइंग्स विल नॉट कंज्यूम फूड जदि मनुष्य खाद्य कंज्यूम करिवो नाही से एनर्जी पाइबो नाही सो दैट केमिकल एनर्जी विल नॉट कन्वर्ट टू मैकेनिकल एनर्जी तो से कोन करिवो रन करि परिबो नाही क्लियर सिंपल कार चालुची जदि पेट्रोल ना न दो पेट्रोल कार कोन होची पेट्रोल जो डालुचे तार कंबशन रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होची से जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होची सेटा कन्वर्ट होची कोड मैकेनिकल एनर्जी जा फले कंट्रोल होची ए जो इलेक्ट्रिक बल्ब जाउची इलेक्ट्रिक बल्ब ता जो इलेक्ट्रिसिटी न दो बल्ब जाउबो दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी न्यूक्लियर जो सुनिथिबो न्यूक्लियर एनर्जी को न्यूक्लियर जो बम तयारी होची बा यूरेनियम रो से न्यूक्लियर मटेरियल रो न्यूक्लियर नाउडेज पावर प्लांट पावर एनर्जी माने पावर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होची न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट करा होची कोन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सो एनर्जी आर डिफरेंट फॉर्म्स कोन केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी थर्मल एनर्जी how we convert chemical energy to mechanical energy how we convert chemical energy to electrical energy or electrical energy to mechanical energy or mechanical nuclear energy to electrical energy different conversion occurs that is chemical energy to electrical energy to chemical energy chemical to mechanical energy mechanical to nuclear to
electrical, we have to convert it into different forms. Thermal to mechanical, we have to convert the different forms of energy. हमें ए एनर्जी को ए एनर्जी कन्वर्ट करिबा, न्यूक्लियर को इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करिबा, केमिकल को मैकेनिकल कन्वर्ट करिबा, केमिकल को इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करिबा, इलेक्ट्रिकल को केमिकल करिबा। ए जो कन्वर्शन का डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अछि हमें जनरली कन्वर्ट करिबा। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू another form. That is the basic principle of thermodynamics. We will discuss later. That is also first law of thermodynamics. Energy can neither be created nor be destroyed. It is only converted from one form to another. So चलिए हम पर डिस्कस करिबा। So बटन सिंपल में तीन दिन से पहला फर्स्ट लगा थर्मो means heat, that is a form of energy. Dynamics means motion. So thermodynamics means energy in motion. Shortly को लिखिए TD stands for thermodynamics. TD stands for thermodynamics. So energy in motion, that is thermodynamics. Energy in motion, that is thermodynamics. And energy is of two types. So energy, what is energy? Capacity of doing work, that is energy. Energy, it is the capacity to do work. Clear? Energy माने कौन? काम करिवार दक्षता। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। मोर सपोज पढ़ेबार दक्षता अछि, मु 3-4 घंटा क्लास नै जाई पारु छी। ओय तो अन्य ये मोर सते एबिलिटी नै 3-4 घंटा काम न करि पारे एटा स्ट्रेस किबा सपोज मते दौड़िया को 40 किलोमीटर साइकिल चलेबा को एका थरे 40 किलोमीटर जा किछि लोक कर अछि एका थरे 40 किलोमीटर बिस मन चलै कि चली जिवे ओय तो समान पढ़ै नै परिबे किबा तो डिफरेंट पीपल लकड़ अछि, डिफरेंट पीपल्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटी। And so we can say that different लोकर different काम करिवार दक्षता रहिछि। different लोकर different काम करिवार दक्षता रहिछि। So what is energy? Capacity of doing work. So simply we can say that it is the capacity to do work. Next, energy on a state and energy in motion. Energy in motion जब जनरली हमें कंसीडर करछे थर्मोडायनामिक्स। एनर्जी ऑन स्टेट माने गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे सपोज कोई पॉइंट रे ठियाली मोर एनर्जी केते, सपोज ए पॉइंट रे मु ठियाली माय एट दैट पॉइंट व्हाट इज माय बॉडी एनर्जी। क्लियर? ए पॉइंट रे जदि मु स्टैंड स्टिल ठियाली ताले मोर एनर्जी केते। वर्तमान एटु 2 किलोमीटर रनिंग कली गोटे पॉइंट रे आउट पॉइंट रे ठियाली ताले वर्तमान बॉडी रे मोर एनर्जी केते, किछि एनर्जी स्पेंड होला ना स्पेंड होला ना। वर्तमान तुमे गोटे बिल्डिंग रो तळ मला ठिया हिछ 10 मला बिल्डिंग ता अछि तळ मला ठिया हिछ वर्तमान 10 मला तुमे चढ़ी गला तुमर तळे जेतिकी एनर्जी बॉडी रो थिला 10 मला चढ़ी सरला परे सेतिकी एनर्जी रहिबो कि रहिबो नाही। सो सेई जो पॉइंट तळ मला को जदी गोटे स्टेट भला गला पर्टिकुलर पॉइंट आ ऊपर मला को अनदर स्टेट भला। सो एटी दुईटा स्टेट आसो एटा फर्स्ट स्टेट इनिशियल स्टेट एटा आसला फाइनल स्टेट। तो ए जो इनिशियल स्टेट रे जेतिकी एनर्जी थिला ए फाइनल स्टेट रे सेतिकी एनर्जी रहिबो नाही, एनर्जी चेंज हो काहेकि न तुमे किछि एनर्जी स्पेंड कलो ए जो कामटा करिया पाई से जो चढ़िबा पाई तुमे किछि एनर्जी स्पेंड कलो। क्लियर? तो ए जो किछि एनर्जी स्पेंड कलो सो ऑन ए स्टेट एटा इनिशियल स्टेट एटा फाइनल स्टेट। एटा स्टेट रे धरला इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट। क्लियर? नेक्स्ट, एनर्जी के प्रकार डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अछि। केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी। ए जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी रही छी एवं आ भीतर इंटर कन्वर्शन हो माने केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल और केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल कन्वर्टेड टू केमिकल, इलेक्ट्रिकल कन्वर्टेड टू मैकेनिकल, न्यूक्लियर कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल। ए वाला डिफरेंट कन्वर्शन हवा। थर्मल कन्वर्टेड टू मैकेनिकल, थर्मल ए जो थर्मल एनर्जी को चेंज हो कोडा मैकेनिकल, केमिकल एनर्जी चेंज हो कोडा इलेक्ट्रिकल, न्यूक्लियर चेंज हो कोडा इलेक्ट्रिकल। ए जो कन्वर्शन दा हवा दैट इज कन्वर्शन आल्सो ओकर। एटा मोस्टली डील विथ कोडा थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल। थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल अप्लाई करी हमें कन्वर्शन करिवा एनर्जी भितर different forms of different forms of energy and that can be interconverted तांको भितरे इंटर कन्वर्शन हो ए एनर्जी भितरे
ओ प्रिंसिपल हम अप्लाई करबा जनरली द प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनामिक हैव बीन अप्लाइड टू कन्वर्ट टू इंटरकन्वर्ट द एनर्जी बता ए जो डिफरेंस केमिकल टू इलेक्ट्रिकल टू केमिकल थर्मल टू मैकेनिकल न्यूक्लियर टू इलेक्ट्रिकल ए भलिया कन्वर्सन करिबा ए जो कन्वर्सन ता हबो का द्वारा हबो ना थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल अप्लाई करी ए डिफरेंट एनर्जी भितरे कन्वर्सन हबो क्लियर we will apply thermodynamic principle in order to convert the different forms of energy, that is how chemical energy converted to electrical, or how electrical energy converted to chemical, or how thermal converted to mechanical, how nuclear energy converted to electrical energy. एगुला को प्रिंसिपल हम अप्लाई करबा we have to apply the principles of laws, we have to apply the principles of thermodynamic and how the interconversion of energy occurs, that we will discuss. Simple देखे पुरे कार निया कार जो पेट्रोल न डालिबो से चलिबो पेट्रोल डालले कोन हो पेट्रोल से मशीन में काम करबो कंबशन रिएक्शन इट गोटे कंबशन केमिकल रिएक्शन हो and all combustion reaction taking place in the presence of oxygen presence रे जो तारा इंजन दा अछि से फंक्शन करे कोन हो पेट्रोल जब कंबशन होबो से केमिकल एनर्जी प्रोडक्शन करिवो से केमिकल एनर्जी ता कन्वर्ट करिवो मैकेनिकल एनर्जी जेतर केमिकल एनर्जी मैकेनिकल कन्वर्ट होबो ताटा रन करिवो सक्षम होबो जे बली सिंपल एग्जांपल तुम बॉडी कथा तुमे जदी 3 दिन खाद्य न खाइबो तुमे दौड़ी परिबो नाही इफ आई विल नॉट कंज्यूम फूड at least 2 days I am not able to run or walk काई मोर बॉडी रो सते एनर्जी रहबो नाही तो एनर्जी इज वेरी वाइटल थिंग फॉर आवर बॉडी ह्यूमन बॉडी सिस्टम क्लियर सो ए जो बॉडी बतन ह्यूमन बीइंग फूड जदी न खाइबो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो नाही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो नाही मैकेनिकल एनर्जी को वी विल नॉट एबल टू रन और वॉक आमे दौड़ी परिबा नाही किबा काम करि परिबा नाही क्लियर इट दिस इज ए फंडामेंटल और बेसिक थिंग्स यू मस्ट नो व्हाट इज अबाउट एनर्जी. This is not needed for it. This is the just introductory part. I am discussing what is energy. Because in thermodynamic principle, we will convert the different forms of energy. Clear? So next, I want to discuss what is the syllabus of thermodynamics. Thermodynamics, in mostly thermodynamics, we will apply what are the important terms involved in thermodynamics. What are the I am just giving the short form. First is important terms involved in thermodynamics. First laws of TD, enthalpy, entropy, free energy, bond energy, second law of thermodynamics, third laws of thermodynamics, and thermochemical reactions, Hess's law and its application. These things deals with this. एटा ला तार सिलेबस कोन जनरली हम डिस्कस करिबा. फर्स्ट डिस्कस करिबा व्हाट आर द इंपोर्टेंट टर्म्स इन्वॉल्व इन टीडी. टीडी मींस थर्मोडायनामिक्स. को टर्म थर्मोडायनामिक्स रे इन्वॉल्व हेछि
I mean, let's discuss करियो बता देखो important what are these laws important terms involved in thermodynamics how ready रहियो term टा heat capacity generally these are the syllables कौन syllabus important terms involved in thermodynamics second is first laws of thermodynamics second what are the terms generally the thermodynamics का enthalpy एटी आउट रहेगा internal energy internal first internal energy then free internal energy enthalpy free energy entropy bond energy heat capacity these are the terms we discuss in thermodynamics कौन से हम डिस्कस करेंगे टोटल डिवीजन next is second law of thermodynamics next is third law of thermodynamics thermochemical reaction exothermic reaction endothermic reactions and applications and out it is enthalpy of formations enthalpy of formation we have to discuss these things in thermodynamics clear so next so here first level thermo means heat or energy dynamics means in motion so we can shortly say that energy in motion that is thermodynamics energy in motion that is called thermodynamics simple but I will give you the exact definition later next energy it is the capacity to do work on a state and in motion on a state means at a particular point at a point or in motion means mode of transfer of energy one form to another form that is suppose eta gote nele toro I am suppose ame gote iron piece nele eti heating kale heat ta kala epotu transfer kala that is mode of transfer clear next we ame discuss kale energy ro different forms achi chemical energy mechanical energy electrical energy nuclear energy thermal energy but is a interconversion of energy occurs interconversion chemical to electrical to chemical kimba nuclear to electrical or electrical to nuclear to electrical or thermal to mechanical is a different conversion hobo energy with a different conversion hobo how we can convert this different energy we can convert this different energy by applying the principles of or laws of thermodynamics law apply kari ame chemical to electrical to chemical thermal to mechanical or nuclear to electrical energy convert kariba clear next we will discuss three important things after that thermodynamics I will give you the introduction of thermodynamics next three things is why we study thermodynamics kahi ke hum thermodynamics padhina what is the utility or what is the objective of reading thermodynamics three things we have to discuss what why and how we study three things why we study thermodynamics what we study in thermodynamics or how we study in thermodynamics three important things thermodynamics में कौन पढ़िबा why काहेकि पढ़िबा how किपरि पढ़िबा कौन पढ़िबा तो three things what we should study in thermodynamics what we study in thermodynamics what to study or what we study in thermodynamics what to study of transformation of one form of energy to other एठी हमें कौन पढ़िबा thermodynamics रे हमें कौन पढ़िबा the study of transformation of one form of energy to other that is one form of energy कहितली that is we can say that chemical energy converted to
electrical energy or chemical energy converted to mechanical energy or nuclear energy converted to so what to study study of transformation of energy. We have to study how the different forms of energy are interconverted, that is chemical energy किभली electrical को convert होछि किमा electrical energy convert होछि chemical को, chemical convert होछि mechanical को, nuclear energy convert होछि electrical को. Nuclear nowadays is a nuclear power plant देखो इंडिया वाला पार्ट करछि यूएसए एवं जापान यूएसए और ऑस्ट्रेलिया एमान के सहित किछि कार्य सहित जे ताकर टेक्नोलॉजी आनी एठी न्यूक्लियर जो मटेरियल जो बम तैयारी यूज होछि यूरेनियम मटेरियल यूरेनियम मेटल से यूरेनियम ता यूज हो बरो यूरेनियम टे जनरली यूज कोतरे न्यूक्लियर बम तैयारी किंतु न्यूक्लियर बम पर्पस ता होछि कोन डिस्ट्रक्टिव पर्पस कंस्ट्रक्टिव पर्पस हला सेही जो यूरेनियम मटेरियल ता आनी सेटा को तमे इलेक्ट्रिसिटी पावर ए जो पावर जन प्रोडक्शन तो वाटर पंप जो हाइड्रो पावर प्लांट सेटा वाटर दे दिउछि किंतु एठी कोन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो एठी कोन हो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो. सो दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. That is, by applying the principle of thermodynamics, we can convert the nuclear energy is converted to electrical energy. So, first, what to study? Study of transformation of one form of energy to another. Different forms of energy, जो energy form that कही दिला हमें, आउरी भी energy form कही भी उड़ेगा अच्छी. Rotational energy, vibrational energy, translational energy, nuclear energy, potential energy, kinetic energy, different forms आउरी भी energy रही थी. We will discuss later. So what to study? Study of transformation of one form of energy to another. Chemical energy convert हो electrical को, electrical convert हो chemical को, chemical convert हो mechanical को, mechanical convert हो chemical को, nuclear convert हो electrical को. ये जो different conversion हो, इधर कहाँ पर हो? ना by applying the principles of thermodynamics. By applying the principles of thermodynamics. That is what to study. Then why we study, or we can say that objective of TD I am shortly TD is thermodynamics. Objective of thermodynamics. What is the objective of thermodynamics? Thermodynamics रे मुख्य objective कौन? मुख्य objective thermodynamics पढ़िबार why हमें कहीं भी thermodynamics पढ़िबा. First पहले what to study कौन पढ़िबा thermodynamics रे why you study thermodynamics? These are basic point लेकिन generation of resources of energy for non-polluting environment. First point, generation of resources of energy for non-polluting environment. देखो different energy हमें production करिबा ए एनर्जी ना कोई chemical energy, electrical energy, nuclear energy, thermal energy, different energy रही छी हमें ताको production करिबा. different energy को कोन करिबा different energy को हमें production करिबा different माने different जगह different energy हमें different जगह रो production करिबा एवं जोटा कि environment परिवेश को हम दूषित करू नथु. clear that one is why you study or what is the objective of thermodynamics? ना हमें different resource different जगह रो हमें different energy production करिबा एवं जोटा कि environment को परिवेश दूषित करू नथु. That is the measure why we study thermodynamics. काहे पढ़िबा ना हमें different जगह रो different energy production करिबा एवं जोटा कि परिवेश को दूषित करू नथिबो. Clear that point करा different जगह रो different energy हमें production करिबा एवं जोटा कि परिवेश को दूषित करू नथिबो. That is generation of resources of energy for non-polluting environment that does not pollute the environment. परिवेश को दूषित करू नथिबो. That is the major or objective of thermodynamics. What is the major objective of thermodynamics? Generation of resources of energy for non-polluting environment that does not pollute the environment. परिवेश को दूषित different जगह रो हमें different energy production करिबा एवं से energy गुडा परिवेश को दूषित करू नथिबो. एटा का why we study or objective of thermodynamics.
Second, alternate source of energy. We have to produce the alternate source of energy. Clear? This is the objective. A first part मोटे लिखने भी चलेगा. Third, how we study thermodynamics. किपरि हमें पढ़ना? To know the basic terms involved in thermodynamics. To know the basic terms involved in basic thermodynamics पढ़िया पाई को टर्म ना हमर जानिबा दरकार. थर्मोडायनामिक्स पढ़िया पाई को टर्म गुडा हमें जानिबा दरकार सेटा भी हमें सेटा आगे पढ़िबा. तर तीनटा जिंस वेरी इंपोर्टेंट है. व्हाई वी स्टडी थर्मोडायनामिक्स, व्हाट वी स्टडी इन थर्मोडायनामिक्स एंड हाउ वी स्टडी इन थर्मोडायनामिक्स. तीनटा जिंस व्हाट कोन पढ़िबा ना स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर. दैट इज स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर. गुटे फॉर्म ऑफ एनर्जी टा अन्य फॉर्म को कन्वर्ट किपरि होउची. That is chemical energy converted to electrical, chemical converted to mechanical, nuclear converted to electrical. ये जो different forms of energy that transfer होची, गुटे form लो आउटे form transfer होची, that we have to study. That we have to study. We have to study how the one form of energy is converted into different form. किभली गुटे form of energy टा आउटे form को convert होची, सेटा हमें पढ़िबा. That is what to study. कौन पढ़िबा? एटा गुटे याद करले कौन पढ़िबा ना आमे पढ़िबा गुटे फॉर्म ऑफ एनर्जी किभली अन्य फॉर्म को चेंज कन्वर्ट होची. कौन पढ़िबा गुटे फॉर्म ऑफ एनर्जी किभली केमिकल एनर्जी टा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट होची, किबा केमिकल एनर्जी टा मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट होची, किबा हीट एनर्जी टा मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट होची, किबा न्यूक्लियर एनर्जी टा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट होची. सेटा हमें पढ़िबा. कौन पढ़िबा? वी हैव टू स्टडी हाउ द one form of energy is converted to another form. We have to study how one form of energy is converted into another form. Clear? It is what to study. Then why we study or what is the objective? कहीं के हमें पढ़िबा thermodynamics. ना thermodynamics ये तो पढ़िबा हमें different जगह रो किभली different energy production करूचे, डिफरेंट जगह डिफरेंट एनर्जी में प्रोडक्शन करूचे एवं जोटा कि एनवायरनमेंट को दूषित करू ना. दैट इज नॉट पॉल्यूटिंग टू द एनवायरनमेंट. पॉल्यूटेड माने दूषित करू ना. चलो व्हाई वी स्टडी थर्मोडायनामिक्स और व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्मोडायनामिक्स? हमें डिफरेंट जगह डिफरेंट एनर्जी प्रोडक्शन करूचे एवं जो एनर्जी कोन होची एनवायरनमेंट को दूषित करू ना. क्लियर? एटा ला ऑब्जेक्टिव और व्हाई काहे के हमें थर्मोडायनामिक्स पढ़िबा. काहे के थर्मोडायनामिक्स पढ़िबा ना हमें थर्मोडायनामिक्स पढ़िबार ऑब्जेक्टिव हला जे डिफरेंट जगह हमें डिफरेंट एनर्जी प्रोडक्शन करिबा एवं जो एनर्जी टा परिवेश को दूषित करू नथिबो. क्लियर? नेक्स्ट हाउ किपरि हमें पढ़िबा ना थर्मोडायनामिक्स पढ़िया पाई हमको किछि टर्म्स जानिबा निहाती दरकार. सेटा हमें नेक्स्ट डिस्कस करिबा. दैट इज we say that basic terms involved in thermodynamics. Thermodynamics जानिबा पाई कौन टर्म दरकार हमें वन बाय वन डिस्कस करी चलिए. क्लियर? तो फर्स्ट ला thermodynamics. Thermodynamics consists of two words. One is thermo, another is dynamics. Thermo means heat, dynamics means motion. Heat means energy. Energy in motion, shortly we can say that thermodynamics. So what is energy? Energy is the capacity to do work. Energy on a state, energy on a state and energy on a slate. What do you energy on a state and energy in motion. Energy on a state at a point, energy in motion, that is mode of transport. Tapare different forms of energy. Then what to study, why study, how we study thermodynamics. कौन भाई पढ़िबा नहीं कौन पढ़िबा थर्मोडायनामिक्स रे व्हाट टू स्टडी इन टीडी थर्मोडायनामिक्स. कौन पढ़िबा थर्मोडायनामिक्स रे ना वन फॉर्म ऑफ एनर्जी गुटे फॉर्म ऑफ एनर्जी केवल अन्य फॉर्म को कन्वर्ट होची. दैट इज केमिकल एनर्जी टा कन्वर्ट होची इलेक्ट्रिकल को, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होची मैकेनिकल को, केमिकल इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट होची केमिकल को, न्यूक्लियर कन्वर्ट होची इलेक्ट्रिकल. गुटे फॉर्म टा अन्य फॉर्म को कन्वर्ट होची किभली कन्वर्ट होची ताका हमें पढ़िबा. व्हाट टू स्टडी इन थर्मोडायनामिक्स. कौन पढ़िबा थर्मोडायनामिक्स रे एला कन्वर्शन ना हमें पढ़िबा. वी हैव टू अप्लाई द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स. हमें इला कन्वर्ट करछि पूरा ना लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करछि. लॉज ऑफ टीडी लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करी गुटे फॉर्म ऑफ एनर्जी आउटे फॉर्म को हमें कन्वर्ट करू छै. क्लियर?
What to study? Next, why we study or what is the objective of thermodynamics? What is the objective of thermodynamics? Objective है कहीं के thermodynamics पढ़िया ना कहीं पढ़िया ना different जगह रू हमें different energy production करिबा एवं जोटा कि environment को pollute करू नथि clear different जगह रू हमें different energy production करिबा जोटा कि परिवेश को दूषित करू नथबो सेति पई हमें thermodynamics पढ़िया why we study thermodynamics. Next, how keep कहीं के what वाला why वाला and how किपरि हमें पढ़िया किपरि पढ़िबा ना किछि टर्म्स हमको जानिया पाई पड़िबो जो थर्मोडायनामिक्स पढ़िया पाई किछि टर्म्स हमको जानिया पाई पड़िबो से टर्म्स गुला कोन नेक्स्ट हम डिस्कस करिया क्लियर so this is the very important thing why to study in thermodynamics and why we study thermodynamics how means we have to know the some basic terms हमें किछि basic terms जानिबा तापरे thermodynamics पढ़ी पारि माने हमें सक्षम होबा पढ़िया पाई otherwise we are not able to read thermodynamics properly or we cannot understand the thermodynamics properly if we do not know the terms what are involved in basic term न जानिले हमें thermodynamics किछि बुझी परिबा नाही किबा पढ़ी परिबा नाही तेणु थर्मोडायनामिक्स को बुझिबा पई आमे किछि टर्म्स यूज करिबा से टर्म्स को जानिबा निहाती दरकार तुम पक्षे क्लियर सो थर्मोडायनामिक्स बुझिबा पई किछि टर्म जानिबा निहाती दरकार सेटा कहले बेसिक टर्म्स से बेसिक टर्म्स कोन नेक्स्ट हम डिस्कस करिबा गोटे गोटे वन वन डिस्कस करि चलिबा एवं थर्मोडायनामिक्स भीतर को पड़ी जिबा सो तेणु एठी दुईटा जिंस फर्स्ट व्हाट टू स्टडी इन थर्मोडायनामिक्स why we study thermodynamics और एपोर्टेन सिलेबस का बोली लिख दीजिए I am writing this left side is your syllabus whatever in the given in the first year books these are the syllabus we will discuss one so first next we discuss what is the definition of thermodynamics what is the definition of thermodynamics clear definition what is the definition of thermodynamics and what are the important terms involved in thermodynamics what are the important terms involved in thermodynamics we will discuss clear definition of TD. Definition of TD. It is the branch of chemistry which deals with the study of quantitative relationship between heat and different forms of energy. It is the branch of It is the branch of chemistry which deals. It is the branch of chemistry which deals with the study of quantitative relationship between heat and different forms of energy. It is the branch of chemistry which deals with the study of quantitative relationship. It is the branch of chemistry which deals with the study of quantitative relationship between heat and different forms of energy. Different forms of energy. और एटा को हम शॉर्ट में लिख परिबा. It is the branch of chemistry
which it is the branch of chemistry which deals with the it is the branch of chemistry which deals with the study of it is the branch of chemistry deals with the study of transformation of study of transformation of one form of energy to another. It is the branch of chemistry which deals with the study of transformation of one form of energy to another. Very important. A theta definition to put anyone जो theta A theta विधर put लिखो. It is the branch of chemistry which deals with the study of transformation of one form of energy to another form. इटा thermodynamics definition को कहला आमे एटा पढ़िबा. Thermodynamics it is the branch of chemistry which deals with the study of transformation of one form of energy to another. किबरी गोटे form of energy टा अन्य form को convert होउची. और it is the branch of chemistry which deals with the study of quantitative relationship between heat and different forms of energy. किबरी heat टा different forms of energy को convert होउची किबा one form of energy is converted into another form. गोटे form of energy टा किबरी अन्य form को convert होउची सेटा के हम डिस्कस करिवा कोते thermodynamics. कोते डिस्कस करिवा thermodynamics डिस्कस करिवा. क्लियर? So it is the branch of chemistry which deals with the study of transformation of one form of energy to another form. एटा कोन डिस्कस करिबा जे किभली हमें गुटे फॉर्म ऑफ एनर्जी टा को अन्य फॉर्म को कन्वर्ट करिबा. एटा ला ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जोटा के डिस्कस करिबा किभली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें कन्वर्ट करिबा अनदर फॉर्म. लाइक केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी, heat energy converted to mechanical energy, nuclear energy converted to electrical energy. जे भलिया different how interconversion of energy takes place एटा को हम स्टडी करबा कोथरे thermodynamics रे. Clear? That term is very important definition. So between these two you write only one or two. You write two definition whichever you feel easy you write it. जोटा तुम सहज लागो तो लिखो फर्स्ट और सेकंड जेट लिखले भी चले. So I think second will be easy like that. So it is the branch of chemistry which deals with the study of transformation of one form of energy to another. गोटे फॉर्म ऑफ एनर्जी टा केवल अन्य फॉर्म को ट्रांसफर होची सेटा हम डिस्कस करिया कोथरे thermodynamics. क्लियर? नेक्स्ट important terms involved in important terms involved in thermodynamics. को important term thermodynamics रे involved है छी जोड़ा के हम डिस्कस करिया. क्लियर? एटा वेरी इंपोर्टेंट जिंस को टर्म ना हमें thermodynamics से अप्लाई करी छे को गुडा अप्लाई करिवा से टर्म ना डिस्कस टर्म को गोटे डिस्कस करी चलिबा. क्लियर? सो फर्स्ट टर्म सिस्टम. फर्स्ट टर्म को एस फर्स्ट टर्म वाला सिस्टम. देखो सिस्टम हमें कहा को कहिबा a part of the universe which is selected for any thermodynamic study is called system. Definition लिखिছি a part of the
universe which is selected, a part of the universe which is selected for any thermodynamic, a part of the universe which is selected for any thermodynamic study is called system. A part of the universe which is selected for any thermodynamic study is called system. देखो system हमें क्या कहना very practical example गोटे दूसरी suppose तुम्हें गोटे हाई स्कूल में गोटे क्लास रे बसिछ कि कॉलेज रे गोटे क्लास रूम रे बसिछ से क्लासरूम टाको आम धरिबा गोटे सिस्टम से क्लासरूम टाको कोन धरिबा आम सिस्टम धरिबा से रूम रो वॉल टा कांतटा सेटा ला बाउंड्री सेटा कोन बाउंड्री से रूम बाहर सेटा ला सराउंडिंग सेटा ला कोन सराउंडिंग अदरवाइज टोटल जो कॉलेज रे तुम पढुछो से कॉलेज टोटल कॉलेज रो बाउंड्री गोटे थिबो से कॉलेज रो बाउंड्री टा भितरे बाउंड्री भितरटा ला सिस्टम बाउंड्री बाहर ला कोन सराउंडिंग बाउंड्री बाहर टा कोन सराउंडिंग टोटल यू टेक योर एंटायर कॉलेज विल बी अ सिस्टम आउटसाइड दिस कॉलेज दैट इज सराउंडिंग मु गोटे आउट सिंपल एग्जांपल दउची देखा एटा गोटे टेस्ट ट्यूब एटा कोन टेस्ट ट्यूब एटा कोला टेस्ट ट्यूब एटा कोन टेस्ट ट्यूब हाई स्कूल जो देखिथिबो नले कॉलेज रे आसे देखो ए वाला टेस्ट ट्यूब ए भितरे कोन हो रिएक्शन बिटवीन NaOH reaction between NaOH and HCl. Reaction between NaOH and HCl takes place in a reaction between NaOH and HCl takes place in a test tube. Reaction between NaOH and HCl in a test tube. Reaction between NaOH and HCl takes place in a test tube. Test tube एटा नहीं करिवो कि बीकर भी नहीं करिवो बीकर नहीं हो जासो एटा देखो एटी NaOH plus HCl एटी NaOH plus HCl मतलब ए जो रिएक्शन बिटवीन से कहला ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स व्हिच इज सिलेक्टेड फॉर एनी थर्मोडायनामिक स्टडी पई हम गुटे पार्ट ले मतलब ए जो बीकर एटा बीकर लगा बीकर ए बीकर भितरे सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl नो रिएक्शन होची ए बीकर भितरे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक NaOH को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एटा ला बेस HCl ला एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हला हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOH हला सोडियम हाइड्रोक्साइड ए जो बीकर भितरे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl ला रिएक्शन करबा कोन करबा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस HCl एसिड और बेस रो रिएक्शन का का भीतर बीकर भितरे करबा क्लियर ए भितरटा को हमें धरले कोन ना सिस्टम ए भितरटा कोन होले सिस्टम से टेस्ट ट्यूब भीतर जदी सही सोडियम हाइड्रोक्साइड ए टेस्ट ट्यूब भीतर भी हमें जदी सोडियम हाइड्रोक्साइड आउ येटा करैबा ए टेस्ट ट्यूब भीतर NaOH और HCl रिएक्शन करैबा ए भीतरटा कोन आसीबो सिस्टम ए भीतरटा कोन आसीबो सिस्टम सो सिस्टम का कहबा ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स व्हिच इज सिलेक्टेड फॉर एनी थर्मोडायनामिक स्टडी ए जो टेस्ट ट्यूब भीतरटा हला सिस्टम ए टेस्ट ट्यूब भीतरटा कोन आसला टेस्ट ट्यूब भीतरटा हला सिस्टम
टेस्ट ट्यूब बाहर ए टेस्ट ट्यूब जो व्हाटएवर बाहर ए बीकर रो बाहर एटा कोन होला सराउंडिंग एटला कोन सराउंडिंग एटा भी सराउंडिंग आ बीकर सिस्टम कोन ए बीकर जदि नबा बीकर रो ए भीतर पार्टटा कोन सिस्टम ए भीतर पार्टटा कोन सिस्टम आ ए बाहर पार्टटा सराउंडिंग क्लियर गोटे बीकर भितरे आमे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रो रिएक्शन करैले से भीतरटा ए भीतरटा ला सिस्टम ए बाहर ए सब बाहर जो बाहर ए सब रहिला एला सराउंडिंग बीकर एटा ला वॉल ऑफ द बीकर एटा कोन वॉल ऑफ द बीकर एटा ला कोन वॉल ऑफ द बीकर ए जो वॉल ऑफ द बीकर बाहर जो रहिला ए वॉल ऑफ द बीकर रो बाहर जो रहिला सेटा ला सराउंडिंग भीतर जो रहिला सेटा ला सिस्टम एटा ला गोटा बीकर ए बीकर भितरे आमे सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl रो रिएक्शन करिवा से भीतर पार्ट को कोन बा जो सिस्टम वॉल से बीकर रो वॉल रो बाहर साइड जहा भी थिबो से टोटल सेटा कोन से सराउंडिंग क्लियर एटी जदि हमें टेस्ट ट्यूब ना टेस्ट ट्यूब भितरे से सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl रिएक्शन करेगा टेस्ट ट्यूब भीतर पार्ट ए जो भीतर पार्ट दैट इज सिस्टम आउटसाइड दिस टेस्ट ट्यूब दैट इज इट आल्सो सराउंडिंग आउटसाइड दिस टेस्ट ट्यूब दैट इज सराउंडिंग क्लियर जदि हमें तमे लेबोरेटरी करछो लेबोरेटरी टोटल रूम ता कि बाहर टोटल सब सराउंडिंग किंतु ए टेस्ट ट्यूब भीतरटा कोन আছে सिस्टम बीकर जदि लो बीकर भितरटा सिस्टम बीकर बाहरटा कोन আছে सराउंडिंग ए जो वॉल ऑफ द सिस्टम वॉल ऑफ द सिस्टम का वॉल का कोन करियो सिस्टम और सराउंडिंग भीतर सेपरेट करियो ए जो वॉल का दैट विल सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग it is the region which separate the system from surrounding that is called boundary तर मतलब सिस्टम कोन जाइयो a part of the universe which is selected for any thermodynamic study is called system ए जो टेस्ट ट्यूब नेलो टेस्ट ट्यूब भीतर पार्ट को कहला सिस्टम ए जो टेस्ट ट्यूब रो वॉल का रहिछि से वॉल का ना कोन बाउंड्री सेटा कोन बाउंड्री टेस्ट ट्यूब बाहरटा ए बाहरटा कोन आछो एटा सराउंडिंग ए बाहरटा कोन कहलियो सराउंडिंग क्लियर तो सिस्टम विषय नो डाउट ए पार्ट ऑफ द बर्तन में क्लासरूम रे बसिछ टोटल से क्लासरूम डालला कोन सिस्टम क्लासरूम बाहर का कोन सराउंडिंग से क्लासरूम में जे कांथोडा अछि सेटाला बाउंड्री सेटाला से कोन बाउंड्री अदरवाइज टोटल कॉलेज पे को लेगला टोटल सिस्टम कॉलेज रो कैंपस जो बाउंड्रीटा अछि कॉलेज रो जोटा बाउंड्रीटा अछि सेटाला बाउंड्री ता पर बाउंड्री पारे गले सेटाला सराउंडिंग तर एंटायर कॉलेज भीतरटा कोन सिस्टम ताकू बाहरटा कॉलेज गेट को बाहर गले सेटा सराउंडिंग से पाचेरी जगह दियाछि दैट इज बाउंड्री सो व्हाट इज बाउंड्री इट इज द रीजन व्हिच सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इट इज द रीजन व्हिच सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग क्लियर सो नेक्स्ट दिस इज ऑल अबाउट सिस्टम नेक्स्ट इज सराउंडिंग rest of the universe other than system rest of the universe other than system is called rest of the universe other than system is called surrounding rest of the universe other than system is called surrounding say example में नहीं परिवा when reaction say test tube example में नहीं जा एडा NaOH plus HCl reaction
between NaOH and HCl takes place within the test tube. Reaction between NaOH and HCl takes place in a test tube, and outside the test tube is called outside the test tube is called boundary. Reaction between NaOH and HCl. NaOH is sodium hydroxide. Sodium hydroxide. HCl is hydrochloric acid. देखो এই যে টেস্ট টিউব ভিতরে আমি রিঅ্যাকশনটা করলে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড হয়েছিল এই ভিতর পার্টটা হলো সিস্টেম টেস্ট টিউব বাহারে যা হইলো টেস্ট টিউব সেই সেটিকে ছাড়ে দিবি এই বাহারে টোটাল হইলা কোন সারাউন্ডিং এটা হলো কোন সারাউন্ডিং এটা কোন সারাউন্ডিং এটা কি কোন সারাউন্ডিং এসব সব সারাউন্ডিং টেস্ট টিউব কেবল এই ভিতরটা হলো সিস্টেম এই যে ওয়ালটা হইলা দিস ইজ দ্য ওয়াল অফ দি টেস্ট টিউব দ্যাট উইল অ্যাক্ট অ্যাজ দি বাউন্ডারি এই যে ওয়াল অফ দি টেস্ট টিউব এটা কোন আছে এই ওয়াল অফ দি টেস্ট টিউব দ্যাট অ্যাক্টস অ্যাজ দি বাউন্ডারি ক্লিয়ার so this is surrounding this is also surrounding this is surrounding this is also surrounding but within this test tube that is called what system within this test tube that is system outside this test tube that is surrounding so surrounding definition rest of the universe other than system is called surrounding rest of the universe other than system chhadi ke baki jo rahila that is surrounding rest of the universe other than system chhadi ke baki jo rahila that is called surrounding next is boundary is a wall of the test tube that wall of the test tube will act as the boundary wall of the test tube will act as the boundary so what is boundary it is the region which separate the system from surrounding jo region ka system और surrounding भितर suppose এটা হলো system এটা হলো surrounding এই যে ওয়ালটা রইলা এইটা হলো boundary so it is boundary called it is the region which separate the system from surrounding it is the region which separate the system it is the region which separate the system from surrounding is called boundary को जोटा सिस्टम सराउंडिंग जो रीजन का सेपरेट करिवो सिस्टम को सराउंडिंग ताल तक कोन बाजिवो बाउंड्री तण कॉलेज रो टोटल कैंपस टा देखो आउटसाइड जो बाउंड्री टा लगाई छी सीधा कॉलेज भीतर डाला सिस्टम आउटसाइड टा कोन सराउंडिंग तण से जो बाउंड्री टा सीधा सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करूची so it is the region which separate the system from surrounding so surrounding ko the region separating the system so boundary definition this is our surrounding so what is boundary what is boundary the region which separates
the region which separate the system from the region which separate the system from surroundings is called the region which separate the system from surrounding is called boundary. तब से ये जो टेस्टिंग एग्जांपल नहीं तो सही टेस्टिंग एग्जांपल में मेंटेन करा a wall of the test tube that will act as boundary. এই যে টেস্টিং রিঅ্যাকশন ভিতরে এই ভিতরটা কোন আছে এই ভিতরটা হলো সিস্টেম এই ভিতরটা হলো কোন সিস্টেম আউটসাইডটা কোন হলো সারাউন্ডিং এটা भी সারাউন্ডিং এই বাহর সব কোন হলো সারাউন্ডিং তো এই যে ওয়াল অফ দ্য টেস্ট টিউব দ্যাট উইল অ্যাক্ট অ্যাজ wall of the test tube that will act as what wall of the test tube will act as boundary तेणु कौन जानी गला फास्ट ला सिस्टम टेस्ट ट्यूब भीतर वाला सिस्टम टेस्ट ट्यूब बाहर का कौन सराउंडिंग से वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब का कौन सा काम करियो बाउंड्री एटा तुम्हें बिकर भी नेले से ये काम एटा कोन बिकर नेले बिकर एनओएच को सेक्शन रिएक्शन करो ए भीतर बिकर भीतरटा एटा सब कौन सिस्टम ए जो वॉल ऑफ द बिकर এটা কোন বাউন্ডারি আর বাহারটা সারাউন্ডিং এই বাহারটা কোন সারাউন্ডিং এই বাহারটা কোন তো এই যদি এটা আমরা বিকার গেল বিকার এই ভিতরটা হলো সিস্টেম এই ওয়াল অফ দি বিকারটা কোন বাউন্ডারি আর বাহারটা কোন সারাউন্ডিং তো বাউন্ডারি কোন এটা সিস্টেম সাপোজ এটা হলো সিস্টেম আর সারাউন্ডিং ভিতরে যে সেপারেট করিব ধর এটা হলো সিস্টেম এটা হলো সিস্টেম এটা হলো সারাউন্ডিং এই যে ওয়ালটা রইলা এই ওয়ালটা কোন আছে বাউন্ডারি এই ওয়ালটা কোন করিব সিস্টেম আর সারাউন্ডিং को সেপারেট করিব যে সিস্টেম আর সারাউন্ডিং को সেপারেট করিব তাকে কোন কইব বাউন্ডারি ক্লিয়ার যে সিস্টেম সারাউন্ডিং যে जोटा सिस्टम को सराउंडिंग थारो सेपरेट करिवो सेटा ला बाउंड्री तने क्लासरूम रे तुमे बसिछ टोटल क्लासरूम भितरटा ला सिस्टम जो कांथना अछि सेटा ला बाहरटा को सेपरेट करूछि सेटा ला से जो कांथना ला तोरा बाउंड्री ता बाहरटा कोन सराउंडिंग आदर ई टोटल कॉलेज भीतर कैंपस रे नै गला सिस्टम से जो बाउंड्री जो लागि जी बाउंड्रीटा दैट इज बाउंड्री बाहरटा ला सराउंडिंग बाउंड्री भीतरटा ला सिस्टम से बाउंड्रीटा सेपरेट करूछि कागो सिस्टम को सराउंडिंग थारो सिस्टम को सराउंडिंग थारो जोटा सेपरेट करिवो दैट इज कॉल्ड बाउंड्री नॉन इंटरैक्टिव सरफेस एंड बाउंड्री टा ए जो बाउंड्री टा रियल ही पारे इमेजिनरी ही पारे ए बाउंड्री टा को रियल भी ही पारे इमेजिनरी ही पारे कोले रियल और इमेजिनरी सपोज तुम्हें धरो एज्यूम करने लो गोटे जगह बता नहीं देखो ए बाउंड्री so it is the region which separate the system from surrounding is called boundary the region which separate the system from surrounding is called boundary next is the region which separate the system from surroundings is called boundary and next fact is that suppose boundary the real or imaginary कोडा रियल बाउंड्री कोडा इमेजिनरी बाउंड्री सपोज तुमर घरटा अछि घर बाहरटा तमे पाचेरी करिना तुमे धरलो ई जगहटा मोर ए जे घर अछि सपोज एटा घर अछि
এই ঘরটা আমরা দিয়েছি এই 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 জায়গাটা এতিকি জায়গাটা তো ধরল এই আছে কিন্তু আউ জনে কোন বলছি সেই ঘর আছে সেই এটা হলো ইমাজিনারি এটা হলো ইমাজিন তুমি করবে কিন্তু যদি এই টোটাল বাউন্ডারি লগাই দিয়েছো এটা হলো ইমাজিনারি ইমাজিনারি কিন্তু যদি এইটি বাউন্ডারি তুমি স্বতন্ত্র ভাবে করে দিয়েছো এটা হলো কোন আসিব রিয়েল এটা আসিব রিয়েল যদি তুমি তারবাড় কিংবা যদি তুমি কোনসি তারবাড় কিংবা বাউন্ডারি করে দিয়েছো সেটা আসিব রিয়েল যদি তারবাড় কিংবা বাউন্ডারি করি না হ তুমি গোটে জায়গাটাকে ধরবা তোমার পড়োশী ধারু সেই পয়েন্টরু সেটা আসলা ইমাজিনারি সেটা আসিব কোন ইমাজিনারি যেটা भारत बांग्लादेश भारत पाकिस्तान ता যদি তোর পাচারিটা যদি তারবাড় দেখিব এলওসি রে দিয়া হইছে এলওসি রে কোন তারবাড়ি গোটে জায়গায় দিয়া হইছে টিভি রে দেখিব যদি তারবাড় দিয়া হইছে সেটা আসলে বাউন্ডারি দ্যাট সেপারেট ফ্রম ওয়ান সিস্টেম এন্ড সারাউন্ডিং যদি সারাউন্ডিং পাকিস্তান হলো তাহলে ইন্ডিয়া হলো সিস্টেম সেই সিস্টেম সারাউন্ডিং ভিতরে সেপারেট করা বাউন্ডারি যদি তারবাড় দিয়া হইছে সেটা হলো রিয়েল যদি তারবাড় দিয়া হইনি খালি ম্যাপ রে আছে আমি ধরবা এই জায়গাটা দ্যাট ইজ ইমাজিনারি দ্যাট ইজ কোন ইমাজিনারি কারণ এই যে যদি ভালো তারবাড় দেইছো পুরা তারবাড় দেইছো পুরা ওয়ান পাচারি করিছো তাহলে সেটা রিয়েল যদি খালি এজিউম করে দিয়েছো এই জায়গার এটা বল এই পরটা পড়োশী তাহলে সেটা কোন আছে ইমাজিনারি সো বাউন্ডারি ইজ রিয়েল অর ইমাজিনারি and boundary is non interacting surface very important thing is boundary not interacting surface boundary not interacting surface boundary is not interacting surface and boundary may be real or imaginary so this is all about boundary next is one terms you should remember system plus surrounding equal to universe আমি সেটা দেখলে কোন জেনারেলি সিস্টেমটা কোন করছি দিস ইজ সিস্টেম এটা ধরো এটা হলো বাউন্ডারি এটা হলো সারাউন্ডিং সিস্টেমটা সারাউন্ডিং কো সেপারেট করছি যে রিজনটা সেপারেট করছি এটা আসলে কোন boundary the region which separate the system from surrounding is called boundary the region which separate the system from surrounding is called boundary so what is system a part of the universe which is selected for thermodynamic study is called system rest of the universe other than system is called surrounding the region which separate the system from surrounding is called boundary another term system plus surroundings equal to universe system plus surroundings equal to universe এটা একটা মনে রাখো system plus surrounding equal to universe so তিনটা জিনিস আমরা ডিসকাস করলাম what is system what is surroundings what is system what is surroundings and what is boundary system plus surrounding equal to universe clear next class more terms will be discussed next class more terms will be discussed thank you